educate girls. सबसे इम्पोर्टेंट ये इनका। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपश होंगे। वेलकम टू सुपारी एक्स बांग्लादेश। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश नेक्स्ट चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ मिरेकल, व्हाई बांग्लादेश इकोनॉमी इज बूमिंग, यानी कि क्या बांग्लादेश नेक्स्ट चाइना बनने वाला है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है जिस तरह से ग्रोथ इनकी हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे अगर देखें 2-3 कंट्रीज़, अक्सर ये पहले नंबर पे भी आ जाता है, दूसरे तीसरे पे भी आ जाता है ग्रोथ रेट के हवाले से, जो इनकी स्पीड से ग्रो कर रही है। एक रिपोर्ट हमने देखी थी, आप ही के साथ हमने वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि 2030 तक इसकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक चली जाएगी। इतनी, यानी कि जितनी अमेरिका के एक शहर की है, अमेरिका का एक शहर की इतनी इकोनॉमी है, 3-4 शहरों की 1 ट्रिलियन है। और पाकिस्तान द हैवी सिस्टम। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या ये नेक्स्ट चाइना बन सकता है। तो इस पे एक वीडियो है स्पेशली बना हुआ, तो देखते हैं फिर आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। Bangladesh is probably not the country that comes to mind when you think about economic miracles. Its GDP per capita is just $1,750, and close to 15 million of the 166 million people in the country live on less than $1.90 a day. But compared to Bangladesh a decade ago, the country is already on the upswing. Since 2009, Bangladesh's economy has grown by more than 6% per year, and its GDP per capita has almost tripled. In addition, the rate of extreme poverty in the country has dwindled from roughly 20% to just under 9%. Welcome everyone, and let's check out how this economic underdog made a 180 turn and doesn't stop pushing forward. बहुत काम किया यार इन्होंने। Basket case. Basket case is a term used to describe a country or an organization whose economic situation is very bad. Shortly after Bangladesh became independent in 1971, Henry Kissinger, then US National Security Advisor, derisively referred to the country as a basket case. Bangladesh became associated with poverty and for decades was seen as an economic laggard in South Asia, making woeful progress in alleviating mass poverty or promoting sustained economic growth. Many scholars and analysts feared that the country would remain a ward of the global community, acutely dependent on foreign aid. Some went as far as to predict a Malthusian nightmare in the country, with its population outgrowing the availability of food. If you want to find out how Bangladesh overcame this rather negative connotation and is now viewed as a miracle, stay until the end of the video. Support us by liking, subscribing, and pressing that bell button. Despite the dire expectations, military coups in 1975, 1982, and 2007, and a series of natural disasters, Bangladesh has in fact made significant progress in reducing poverty and in promoting economic growth. Among South Asian economies, Bangladesh is touted as a rising star. In 2019, its per capita income was $1,856, substantially higher than Pakistan's $1,1285 and only $250 less than that of India. In 2020, Bangladesh might have edged ahead of India because it registered a growth rate of 2.4%, whereas India's GDP shrank by 7.3%. Few least developed countries can match Bangladesh's record in this respect. Various indicators of human development also show significant improvement. Life expectancy in 2019 was 72.6 years, a gain of over 7 years since 2000. Mean years of schooling were up from 4.1 to 6.2, and the country's Human Development Index (HDI) value had climbed from 0.478 in 2000 to 0.632 in 2019. The sources of growth. Bangladesh's growth stems in large part from its success as an exporter of garments, which account for 84% of its total exports, and remittances from overseas, which amount to over 6% of GDP. The principal driver of growth is investment, which has risen from 24% of GDP in 2000 to 32% in 2019. Very little is derived from total factor productivity, below 1% per year since 2000,
the primary determinant of long-term growth of incomes for all countries. Among the country's achievements is a dramatic improvement in its citizens' average standard of living. Even more noteworthy are the improvements in social indicators such as life expectancy, infant and maternal mortality, fertility, and female labor force participation. And equally important, Bangladesh has managed to sustain a modicum of democratic stability, keeping the army in the barracks. Once infamous for power cuts, Bangladesh has become a surplus power-generating country. It also exports around $1 billion worth of tech products and services every year. This is likely to jump by 5 times by 2021. In 5 years, according to many estimates, Bangladesh will escape the least developed country tag, which, when it happens, will be a breakthrough moment for the country. Garments, remittances, and agriculture. The impressive growth of the garment sector has brought about structural transformation in the economy of Bangladesh. Dependence on export and decline in foreign aid, dependence on manufactured goods rather than on primary goods, providing employment to female workers, making them empowered, especially among the poor and the uneducated. This sector is a contributor to the eradication of poverty, where the extreme poverty is 10.5%. The total number of laborers working abroad was 11.5 million in 2017, which is 4.5% of the total population and 11% of the total labor force, and the remittance figure from the expatriates stood at $18.21 billion, registering an all-time high in the last fiscal year. As a result, the country's foreign currency reserve was increased, which was $44.03 billion, contributing to the economic development and reduction in the poverty level. During the first 5 months of the current fiscal year, remittance inflow has even increased by 22.67%. The flow of remittances into the country shows an upward trend in the current fiscal year, as the government has taken measures, including 2% cash incentives, to streamline the legal channel for encouraging the non-resident Bangladeshis to send money to the country. The major factors contributing to higher remittances through the banking channels include depreciation of taka against the US dollar, higher rate offered by local banks, and the surveillance of Bangladesh Bank on Hundi. The agricultural sector of the country contributed tremendously to its economy in terms of food security, employment generation, and poverty alleviation. There has been a sharp increase in food grain production during the last 4 decades. Rice, the staple food of the country, was produced triple to 35 million metric tons as a result of the liberalized input market, expansion of irrigation, and research of rice for innovation and yield. Furthermore, growth in small, medium, and micro enterprises has also contributed to the economic development of the country. The foreign direct investment, FDI, is considered as an important motivator of economic development and a principal avenue for the development finance. Over the last 10 years, the FDI has been playing an essential role in maintaining the tempo of the current economic development of Bangladesh. It has also immensely contributed to reinforcing foreign currency reserve, creating new job opportunities, and increasing labor skills. बिल्कुल Educate girls. सबसे इम्पोर्टेंट ये इनका If there is one mantra for developmental success, it might be this: educate girls. The World Bank, which has given around $29 billion to Bangladesh in assistance and interest-free credit to help its development, has noted the country is that rare example among developing nations of a place where gender parity has been achieved in primary education. This means an approximately equal number of boys and girls receive the same quality of primary education in Bangladesh. This has led to more women entering the workforce in the manufacturing sector. 80% or more of the organized textile jobs are held by women. A 2014 investigation by the National Bureau of Economic Research by Rachel Heath and Mushfiq Mobarak discovered that there was a distinct connection between the education of women and them getting factory jobs, especially in textiles, and further growth in education. It was, in a sense, a virtuous cycle. They found that the manufacturing sector growth in Bangladesh had sizable effects on parents' propensity to keep younger girls in school.
older girls' propensity to engage in wage work, and both of these factors allowed women to postpone marriage and childbirth. The paper said that the garment manufacturing industry in Bangladesh had played a definitive role in the betterment of women's lives for more than 4 decades. Getting good primary education, especially for girls, has had an additional benefit of starting to manage better and bring down Bangladesh's large and densely packed population. Population growth has stopped exploding. In fact, it has started to fall, and between 2010 and 2018, the number of employed workers living under the poverty line declined by around 60%. A way forward for Bangladesh. Armed with the knowledge that there are different types of innovation, each having different impacts on an economy, Bangladesh can continue its economic ascendancy by investing in market-creating innovations. If the government and entrepreneurs within the country focus on making products and services more affordable for Bangladesh's 166 million people in areas such as healthcare, food production, manufacturing, insurance, and entertainment, these new markets will lead to more sustainable jobs. Efficiency innovations, such as those prevalent in garment manufacturing for the rest of the world, can only take the country so far. It is by investing in market-creating innovations that Bangladesh can not only sustain its current miracle, but also propel its economy to greater heights. What do you think about the miracle in Bangladesh? Can it be sustained, or is it just a temporary success? If you're from Bangladesh, please share your views with us. Don't hesitate to give your opinion and share your knowledge with everyone in the comment section below. Yes. Thank you for watching, everyone. बिल्कुल यार, इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो उन्होंने पूछा आप लोगों को क्या लगता है कि सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड पे ये पूछा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, और इससे बल्कि और स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अब उनका माइंडसेट बन चुका है। खासकर जो इनकी महिलाएं, जो इनकी औरतें हैं, 80% से ज़्यादा गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर है 80%। हाँ, जो इंडस्ट्री है ना उसमें 80% वुमेन्स काम करती हैं टेक्सटाइल की। जो औरतों का सबसे ज़्यादा हाथ है, आगे लेके जाने, औरतों में हाथ है, क्योंकि जब एक माँ जो है, जब वो सीखेगी ये चीज़ें, उसको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता होगी, तो वो अपने बच्चे को शुरू से ही वैसी ट्रेनिंग देगी। बिल्कुल, कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे के माइंड में शुरू से होगा कि हाँ ये काम है जो लाजमी करने का है, एक बनता है, एक उसके जहन का हिस्सा बनेगा बचपन से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और हमारे यहाँ बड़ा होता है, फिर पता चलता है माएँ घर पे बैठी हुई हैं, उनका काम नहीं है, वो हाउसवाइफ हैं, ये है वो भी ज़रूरी है अपनी जगह, लेकिन इनका काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि असल परवरिश तो माँ ने करनी है, जो औरत है उसने करनी है। बाप तो मतलब उस तरह नहीं कर पाता ना, क्योंकि माँ से ज़्यादा क्लोजनेस होती है हर चीज़, हर बच्चे की। तो इस वजह से जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि पिछले 40 डेकेड से, मतलब 4 डेकेड से, 40 सालों से इन्होंने ये सारा कर रहे हैं, औरतें इनके साथ शामिल हैं, शाना बशाना है, काम कर रही हैं, तो इससे ये ज़्यादा जो ग्रोथ सीन है वो इस वजह से इतना ज़्यादा हाई है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मुझे लगता है इसीलिए हाई है, क्योंकि एक बंदा काम करता है, उसका जहन फजूलियात में इतना नहीं जाता, फिर वो बिज़ी होता है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों में जाने के बजाय वो फिर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा अपना ध्यान लगाता है। और पॉवर्टी रेट पे इन्होंने किस तरह से काबू पाया, मतलब कम करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट काबू पा ही लिया, 20% से 9% पे आ चुका है वो। और मतलब यार हर लिहाज से अगर देखें ना तो चीज़ें अच्छी ही हैं। मिलिट्री क्यू भी यहाँ पे गया, मार्शल लॉ पे 3 बार यहाँ लग चुका है, लेकिन बाद में इन्होंने फिर बताया उनको, सिविलियंस ने, कि आपकी जगह असल बैरक्स में है। आर्मी के साथ मतलब प्यार मोहब्बत और दिली लगाव एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये आके रूल करें जैसे पाकिस्तान में करते हैं या बाकी इजिप्ट वगैरह में करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इस वजह से कंट्री का ये हाल होता है। आज पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से हट जाए तो पाकिस्तान के हालात इससे कई बेहतर हो जाएंगे। ये बेशक जैसे मर्जी है पाकिस्तानी, लेकिन सिविलियन चलाए ना तो हालात कई बेटर होंगे, क्योंकि जो फौजी है वो अगर फॉरेन पॉलिसी चलाएगा तो वो बेड़ा घर की करेगा उसका। और आप अपनी चीज़ बना लें, और आपके पास बाहर जाने के लिए जो दरवाजे पे फौजी बैठा हुआ है, जो आपने यहाँ घर पे बनाया है, तो उसने अपने लिहाज से चलाना है, तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है फिर वो अपना जितना जहन है, फौजी जहन है, उस लिहाज से काम करेगा। लेकिन अगर आपके दरवाजे पे कोई सिविल बंदा बैठा हुआ है, जैसे आजकल बिलावल भुट्टो है, तो अगर वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो एक ओपन माइंडसेट से देखेंगे, फ्लेक्सिबल माइंडसेट से देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और बांग्लादेश में अगर मिलिट्री को लगा रहता, यानी कि मार्शल लॉ लगा रहता, तो आज बांग्लादेश यहाँ पे नहीं होना था, क्योंकि उनका माइंडसेट होता ही अलग है। जब से उन्होंने उनको पीछे भेजा, 2007 में मेरे ख्याल में लास्ट लगा था आखिरी बार, तो उसके बाद फिर इन्होंने उनको मतलब अपनी जगह बताई कि आपकी असल जगह ये है।
दिल में आपकी जगह है, आप कंट्री को सर्व करते हैं, आप बॉर्डर पे खड़े होकर पूरे कंट्री को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल। उसको बिल्कुल माना जाता है और समझा जाता है। लेकिन असल काम जो है कंट्री को चलाने का वो सिविलियन का है। फौजी का काम जो है वो कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, तो बाकी काम जो है इनका है। तो इस वजह से आज ये देखें कि ग्रोथ बिल्कुल मेन रीज़न जो है वो मेन ये है। रीजन यही है यार, किसी कोई भी मुल्क है ना, अगर उसकी फौज आगे आ जाएगी जिसका ये काम है हाँ। कि वो चीज़ कंट्रोल करे, अगर वो आगे ना आएगी तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जांपल के हमारा ये काम है ना कि हमने एक काम करना है, तो वो जो मेरा काम है वो आप करोगे ना, तो उसमें अलकाबू का मसला लाजमी आ जाएगा। हाँ। शायद ये अगर ना आए, लेकिन उम्मीद है कि आ ही जाएगा, क्योंकि असल में वो काम मेरा है। और जब आपके काम में मैं इन्वॉल्व होऊंगा ना, तो वो आपके काम में भी मसला आ जाएगा। हाँ तो इसी तरह ये है कि अगर मुल्क में जिस चीज़ की जो जो मतलब जिम्मेदारी है जिस बंदे की, अगर उसी उस चीज़ से या उसी मैनेजमेंट से काम हो रहा है, तो वो कोई भी मुल्क हो, लाजमी नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश या इंडिया या कोई मतलब कोई भी मुल्क है ना, वो जब तक उसकी मतलब जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अगर वो आगे जाता है तो वो चला जाएगा। अगर उसके रूल्स को हम फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली 100% बात है कि एक बंदा भी गलत काम कर रहा है ना, तो उसको मुल्क को फर्क लाजमी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपनी राय लाजमी बताइए, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, और क्या आपको लगता है कि क्या बांग्लादेश इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा, या क्या योर ओपिनियन है इसके बारे में आपका? तो लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ढाका पे हमने बनाया और चिटागोंग पे और इस तरह डेवलपमेंट पे और भी काफ़ी वीडियोस बनाए। आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।